Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, beta. Am I audible? आवाज आ रही है? Okay. Let's wait for a few minutes that other students can join. Okay, Narayan, Manur. Yes, sir. Okay, बेटा. बेटा इस सेशन की भी सागर अटेंडेंस लेते रहना और मैरी you are also supposed to take attendance at the session as well. So at the end of the class you have to send me a list. आपने सारे names you have to share screenshots as well. आपने screenshots भी मुझसे share करने हैं and then आपने जो पेज पे जो अटेंडेंस स्क्रीनशॉट्स को देख के लेनी है then you have to send that list to me as well. Okay, good. For your hard work, as I have told that few grace marks would be awarded to CR and GR as well. But agar CR and GR both, if you will be active in the sessions in all the classes and you will be provided good feedback regarding the attendance and other issues, then you will be awarded few grace marks from my side. मैं अपनी तरफ से आप लोगों को grace marks भी दूंगा 3 to 4. 3 or 4 marks. Now let me share my screen, beta. Yeah, here is yes. So yes, I was talking about the types of classical dramas. These are the 4 types. But before I explain these types, let me ask you a question. Or let me go back to my first slide. मैं पहली स्लाइड पे दोबारा वापसी जाता हूँ. Here, ये जो 2-3 सवाल थे, आई होप कि आपको ये सवाल अब क्लियर होंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा? नाउ डू यू नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा? दिस इज द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये 4-5 स्लाइड है जब मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ आई थिंक, आई होप के नाउ यू शुड नो what is the history of drama. At least you have a fair idea. आपको एक अच्छा खासा fair idea होगा what is the history of drama. Let me know in chat box or raise your hand. Yes बेटा, कौन बताएगा? Do you know what is the history of drama? आपको समझ में आया है बेटा कि history of drama क्या है? Yes, I'm waiting for your response. कायनात, okay बेटा, okay. Yes Alina. Yes beta, I'm waiting for your responses. Chat box is open. Kainat, okay, okay. Alina says okay. That means okay, there are only few students. Now they know what Malaika says, yes, sir. Now they know that what is the history of drama. But except these few, Rajman sir, basically drama started in Anglo-Saxon period and it is told through oral stories. Raj Mohammad Lashari. Kuratulan says yes. See, Raj Mohammad Lashari, beta, the history of drama belongs to pre-Anglo-Saxon period. But see, I have told you that you have to keep 3 points in your mind. The first is that you have to keep one and most important thing in your mind, that the time of Julius Caesar, 55 BC. You have to keep this point in your mind, that Julius Caesar के time पे क्या था? The Britain was being called as a Celtic territory. उसको Celtic territory का के नाम से जाना जाता था. And there was the concept of dramas, but it was in term of oral stories. वो oral stories के shape में था. Okay बेटा. And then the second the first transformation in drama took place. जो first transformation है हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा. तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई 407 AD में, व्हेन रोमन्स withdrawn
withdraw from the Celtic territory, and then Germanic tribes attacked on the Celtic territory. And at that time, there was a little bit transformation in the drama, and now the oral stories were being told in the gatherings and marriages and some special occasions. जो उनकी फेस्टिवल्स होते थे या फीस्ट होते थे, उनकी जो गैदरिंग्स होती उनमें ओरल स्टोरीज बताई जाती थी अपने लोगों को इकट्ठा करके। एक बंदा बीच में खड़ा हो जाता था टेबल के ऊपर, एंड देन दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज एज वेल इन दिस वे। ओके, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन during the 407 AD. The second transformation took place during the Anglo-Saxon period. अब Anglo-Saxon period के अंदर क्या हुआ था राज मोहम्मद लाशारी के, the silent drama took place over there. Silent performances took place. Street performance took place over there during the time of Anglo-Saxon period. Mariam, at first and after Aristotle's Poetics, the earliest work of dramatic theory, drama was considered as the genre of poetry and was, it seems, copy-paste from Google Baba. See, beta, poetics का भी जिक्र है. I will explain to you the concept of poetic as well, especially literary criticism, the subject which I am teaching to you, to all of you. So in the literary criticism, the poetics is included in your course outline. So poetics को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको explain करूंगा कि what actually poetics talk about the tragedy and drama, and what Aristotle and Plato says about the drama and tragedy. So these are the things which I will explain to you in the in that subject. So वहां से भी आपको एक fair idea हो जाएगा, एक अच्छा खासा आपको idea मिल जाएगा. Okay बेटा? But see बेटा मेवा, ये जो आप बता रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रायर हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, के हिस्ट्री जो है ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया है. सपोज आई थिंक यू वर एब्सेंट इन फर्स्ट सेशन. इन दैट सेशन आई एक्सप्लेन्ड के जो जूलियस सीजर 55 बीसी में ड्रामास किस फॉर्म में थे, 407 में कैसे थे, फिर एंग्लो सेक्शन में कैसे थे. तो दिस इज द, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम. नाउ लेट मी ask one question again. From where history of English literature and drama was started? See बेटा, जब ये मैंने slides आपको explain की तो ये सवाल भी आपको clear होगा. Now what is the connection of this history with drama? So you see, the history of English literature or history of literature, any literature, is directly or indirectly connected to the drama as well. Because if there is the history, there is the drama, whether it is in oral tradition, in oral stories, or in silent mode, or in any method, but drama is over there. So they both are connected to each other. तो आई होप कि ये जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए या पूछे या आपको बताया कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप कि योर कॉन्सेप्ट वाज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ let me explain the types of drama to all of you. The first and the most important type is tragic plays. Now let me explain this type. Tragedy begins in ancient Greece, and the first great tragedy were staged at the part of a huge festivals. That means Greece was the time, during the time of Greece, the tragedies were being performed during the festivals. The people used to gather in a ground or in a place, in a big hall. There performers used to perform tragedies. So the concept of tragedy came from there. One of the most celebrated tragedies of the ancient Greece was Oedipus Rex. Oedipus Rex is included in your course outline in this course, classical drama. So I will explain each and every part of Oedipus Rex as well, that what actually it is all about. And some of the BS students already know about the Oedipus, because when I was teaching in fourth semester, I quoted many a times Oedipus Rex to you. Now, the second point is the Romans were the first civilization we know who allow women to act in plays. Now you see, if you trace the history, then you would come to know that English dramas and English tragedies and the history of English literature, if you trace the history of English literature, then you will find one thing, that they didn't never ever allowed women to come forward, to come on the stage. But Romans were the first, they allowed women to act in the plays as well at the time. Even I'm talking about the ancient Greece. So they allowed women to take part in plays and dramas. Although women were not allowed
on the English stage until restoration in 1660. This is the general information about tragic plays. Now let's move further. How tragic drama came in existence. Aeschylus was the first tragedian to codify the basic rules of tragic drama and considered by many to be the father of tragedy. If someone would ask you who's the father of tragedy or the tragedy drama, then Aeschylus is the one who's known as the father and the founder of tragedy. And he is the one who invented trilogy. अब ये ट्रायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि ट्रायोलॉजी में 3 प्लेज परफॉर्म किए जाते थे और उन 3 प्लेज में ये होता था कि फर्स्ट जो 2 प्लेज होते थे वो ट्रेजिडिकल प्लेज होते थे एंड एट द एंड ये जो परफॉर्मेंस से स्टार्ट होती थी फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्मेंसेस होती थी एंड टिल इवनिंग द फर्स्ट 2 प्लेज were used to be performed on tragedical events, and the last play used to be performed related to the satire play. Satire means the funny type play or the criticism through fun. So this is known as the satire plays for being staged to revive the spirits of the public. जब सारा दिन ट्रेजेडी देख देख कर लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे, so in order to revive them, the satire play was being performed at the end of trilogical series. ये जो ट्रायोलॉजी की सीरीज थी बेटा, इसमें जो आखिरी प्ले होता था वो सटायर प्ले होता था. सो ये जो टेक्निक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एसिक्लस, ये भी इसी ने ही इंट्रोड्यूस कराई थी. Tragic plots were often based upon myths from the oral traditions and took the form of narratives. Now here, this is the important point which you need to keep in your mind, that how tragic plays were being written over there, how the stories were being written. Actually, there were the myths. The myths were taken from oral tradition. Suppose the tradition, the oral stories which were being told from generations to generations, they listen the stories, they got the story from there, and then they transform it into the narrative and presented by the actors. Then actors came on the stage and they performed on it. So that became a tragedical drama or tragic play. Now here are some of the characteristics of a tragic hero. In tragedy, in any tragedical play, there must be a tragic hero. And what should be the characteristics of tragic hero are given. According to Aristotle, in a tragic play, a drama, there must be a tragic hero, because it is the basic requirement of a tragedy. If there is not a tragic hero, then that would not be a tragedy at all. अगर उसमें कोई tragic hero नहीं है, hero के साथ tragedy नहीं हो रही है, तो that would not be considered as tragic play. Tragic hero should have some significant characteristics, such as his actions should support the plot of the story. Happiness to misery. Now, what is the happiness to misery? Happiness to misery means in starting, when you will read the play or when you watch the play, you will see that the tragic hero or the hero of the play is very happy. He's living good life, an excellent life, or you can say that he's living in, he or she is living ideal life, but then he will go to the misery. He will live a miserable life. So it must be included in the tragic play. Then hamartia. It is a term which is given by Aristotle in his Poetics. It means error, a tragic flaw. Tragic flaw means a mistake. Error means mistake done by the tragic hero. The hero will do some errors. He will make some mistakes. Those mistakes are known as tragic flaw. If the tragic flaw is not there, it would not be considered a tragedy at all. अगर उसमें tragic flaw है ही नहीं तो वो tragedy नहीं होगी. और वही tragic flaw, वही जो mistake है उसको ले जाएगी tragedy की तरफ, वो उसी की वजह से उसके साथ tragedy होती है. Okay? So there must be a hamartia, also known as tragic flaw. True to self. The hero must be true to self. That means his deeds must be for the sake of good, not for the sake of evil. Evil की तरफ उसके जो जितने भी deeds हैं, उसके जितने भी actions हैं, that must be good intended actions. उसके actions
कि जो इंटेंशन है वो गुड होनी चाहिए, ना कि बैड होनी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ट्रेजिक हीरो. आई होप के यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. Some important terms to remember. अब जब whenever you are talking about बेटा, whenever you are talking about tragedy, then you must remember these some important terms. Hamartia is there, which I have explained to you, and there is inaugurasis, inaugnosis. If please pardon me if I am not pronouncing it correct. Recognition of tragic flaw or truth. See beta, ये जो recognition of tragic flaw and truth है, that is very very important. Let me give you example from Oedipus Rex. No, not Oedipus Rex, but from Dr. Faustus. Dr. Faustus, when he sold his soul to the Lucifer, उसने तो खुशी खुशी अपनी soul को sell कर दिया, and now he was very happy. And he was saying that I have all power, whatever I want to do, I can do it in a just wink of an eye. So when he recognized the tragic flaw, when he came from ignorance to knowledge, see beta, tragic flaw or truth, जब आप ignorance से knowledge की तरफ आते हैं, जब आपको recognition होती है truth की कि you have did something very terrible, then at that time the tragedy will take place, and at that time the character, the major character or the hero will face the tragedy. तो उससे उस टाइम पे ट्रेजेडी स्टार्ट होती है when ignorance to knowledge उसके पास आती है, when recognition of truth उसके पास हो जाता है. Then mythos also known as a plot is also known as mythos. इसमें क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, सिंपली नॉवल के अंदर भी प्लॉट होता है एंड प्लेस के अंदर भी प्लॉट होता है. तो सी, इसको मैथोस कहते हैं. मैथोस अरिस्टोटल ने इसको ये टर्म दिया है. कैथारसिस, प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस. बेटा कैथारसिस का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस. अगर किसी को बेटा ये कैथारसिस का समझ में आ रहा है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू. किसी को आ रहा है व्हाट इज कैथारसिस? एनी आइडिया बेटा? यस. No. See, beta, catharsis mean whenever we watch or we read any tragical drama or any tragical article, then what happens? Suppose मैं आपको हमारी अपनी जिंदगी से एक मिसाल देता हूँ कि whenever we watch any drama, हम कोई ड्रामा देखते हैं, आजकल का जो भी ड्रामा होता है, whether we are watching a drama or movies, तो जब देखें कि जो उसका मेजर कैरेक्टर होता है, whether हीरो और हीरोइन, उसके साथ जब इनजस्टिस हो रहा होता है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही होती है, उसके साथ ट्रेजेडी हो रही होती है, सो वी बिकम सैड. हम सैड हो जाते हैं, हम उदास होते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल, दे स्टार्ट क्राइंग. लोग रोना शुरू कर देते हैं, हालांकि ट्रेजेडी या जो इशू हो रहा है वो ड्रामा या मूवी में हो रहा है. एंड वी ऑल नो दैट इट्स नॉट रियल, इट्स अ मूवी, इट्स अ ड्रामा. वी ऑल नो दैट कि ये रियलिटी में नहीं हो रहा है, ये एक फिक्शन है. बट डिस्पाइट द फैक्ट we become very much emotional. हम बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं. Some people start crying, some people become very sad, and they said, it should not be, this should not be happen to that person. So you see, हम इस तरह से कहते हैं कि इसके साथ यार ऐसा नहीं होना चाहिए था. So कैथारसिस का यही है. कैथारसिस का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम ट्रेजेडी को देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. हमारी जितनी भी सिंपैथी होती है, दैट गोज साइड बाय साइड द हीरो. हमारा जो हीरो तो उसकी साइड बाय साइड हमारी सिंपैथी होती है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी सारी सिंपैथी उसके साथ हो जाती है. बट व्हेन द ड्रामा और दैट सीन इज ओवर, जब वो सीन खत्म हो जाता है या ड्रामा खत्म हो जाता है, देन हमारे जो इमोशंस होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं. दैट मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस. एक सर्टेन पॉइंट पे हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बड़े हाई हो जाते हैं, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़े सैड हो जाते हैं. बट जब वो सीन खत्म हो जाता है, देन इमोशंस बिकम नॉर्मल. दैट मीन्स कि हमारे जो इमोशन है वो प्योरीफाई हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. आई होप कि ये समझ में आया होगा कैथारसिस को कॉन्सेप्ट. यस बेटा, समझ में आया? Are any confusion in catharsis? Yes, beta. Okay. Okay. Yes. इसमें सी है, ये टाइपो है.
टाइपो है बेटा इसमें, कैथारसिस की स्पेलिंग में सी आएगा। स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ इमोशंस, करो तो लेन। हाँ, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ सेड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। He said the definition of poetry. The definition of poetry is spontaneous overflow of feelings and emotions for a certain magnitude. In that way, there is a definition, and that is quite related to the catharsis. Okay, okay, beta. Okay, beta. Then after the perpetua climax of the story, a turning point in every story, there is the climax or the turning point, and Decius and the Lucius. These are some important terms which you can read from the PPT, and you can remember them if you want to. Now let's move forward to a next slide, that is mystery plays. See beta, the mystery, yeah, हमारे total 4 types है. The first was tragic plays and the second is mystery plays. These plays were based on their religion. At that time, during the ancient time, the mystery plays were being performed there, and they were being taken from the religion. Suppose the stories were being taken from their religious activities or religious stories, and then they used to perform mystery plays. Stories used to be taken from their religion. They used to perform them in the streets, festival, etc. Now, these mystery plays were also being performed in the streets, but here some little transformation took place in the concept of drama. The first transformation is that after the Anglo-Saxon period, they started playing drama in streets through the weaving pictures. Suppose there were some characters. One character is standing on one side of the stage, and the second character is standing on the second side of the stage. So now let me explain it to you in another way. The character A and character B, एक साइड पे खड़ा हुआ है, दूसरा दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है. Now character A takes a picture. He comes on the stage slowly showing picture to the audience. जो ऑडियंस वहां पर बैठी हुई है स्ट्रीट में या कहीं हॉल पे बैठे हुए हैं, so he is showing that picture to them, and slowly he is moving to the other side of the stage. When he went there, from that side, another character, the character B, came on the stage with another picture, and he's showing that picture to the audience, and he's taking that picture to the other side of the stage. Similarly, अब यहाँ से पिक्चर एक साइड पे वो ले जा रहा है, फिर वहां से वो ले आ रहा है. You see, in that way, the dramas were being performed through the weaving pictures. Pictures के through dramas perform किए जाते थे. The mystery plays were being performed in that way. In even some of the medical plays were also being performed in that way. After the Anglo-Saxon period, अगर कोई आपसे पूछे, during the Anglo-Norman period, this was the transformation in the field of drama which took place over there. I hope कि यहाँ पर बेटा आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये जो पिक्चर्स होती थी उनको ये यूज करके और ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट होता था वो लोगों को देते थे. स्टोरी एक ट्रांसफर कर देते थे ऑडियंस के वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं थ्रू, बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स. तो इस तरह से वो पिक्चर्स दिखा के और सारा अपना मैसेज होता था. दे यूज्ड टू कन्वे देयर मैसेजेस. आई होप कि यहाँ के आपको मिस्ट्री प्ले समझ में आए होंगे. इज दैट क्लियर बेटा? ओके अब्दुल सत्तार. यस. ओके. ओके बेटा. कायनात. Yes, beta, Kainat, you do not understand properly. See, beta, let me explain it to you again. कि the mystery plays were, the stories of mystery plays were being taken from their religion. उनकी religion की जो stories थी वो वहाँ से लेते थे, stories वहाँ से लेते थे, and then they used to perform those stories through the characters in the streets में आके वो अपने characters के through वो perform करते थे. and वो जब street performance होती थी तो लोगों उनको पैसे भी देते थे in the shape of appreciation. ठीक है, तो कोई बंदा साइड में बैठ जाता था, कोई कपड़ा बिछा देता था, तो उसके ऊपर वो आके उसको थोड़ी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे यूज्ड टू गिव देम मनी एज वेल. बट परफॉर्मेंसेस कैसे होती थी कि स्टेज की एक साइड पे एक बंदा खड़ा होता था, स्टेज की दूसरी साइड पे दूसरा बंदा खड़ा होता था. नाउ जो एक साइड वाला बंदा वो एक तस्वीर लेता था, वो
जिस तरह की स्टोरी होती थी वो ड्राइंग उस तरह से उसके ऊपर बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक अ ड्राइंग, वो ड्राइंग इस तरह से बनाकर उसके थ्रू मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि जब वो तस्वीर कैरेक्टर लेके ऑडियंस को दिखाता हुआ स्टेज से स्लोली स्लोली दूसरी साइड पे चला जाए, आज ऑडियंस उस बड़ी तस्वीर को देखती थी तो उनको एक मैसेज कन्वे हो जाता था। वो उस साइड पे चला जाता था तो वहां से फिर दूसरा जो कैरेक्टर होता था, दूसरा जो बंदा होता था, दूसरी तस्वीर लेके उसी के कनेक्शन में लेके वहां से दूसरी साइड पे चला जाता था, तो एक मैसेज कन्वे हो जाता था। सो इन दिस वे द ड्रामास वर बी परफॉर्म्ड थ्रू द वेविंग पिक्चर्स। तो इस तरह से ड्रामास परफॉर्म हो रहे थे एट द टाइम, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रामा। इट इज आल्सो नोन एज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताया कि आफ्टर द जूलियस सीजर जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी 407 एडी में हुई। देन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एंग्लो सैक्सन के टाइम पे हुई, एंड दिस इज नोन एज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन द ड्रामा, के साइलेंट ड्रामास के बाद अब वेविंग पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने ड्रामास को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। दैट्स सो बेटा। यस बेटा, मिस्ट्रीज इस तरह से होता था राज मोहम्मद लाशारी के बेटा, कोई ऐसी मिस्ट्री होती थी जिसका कोई हकीकत से मींस के हम ये नहीं कह सकते कि मिथ है या नहीं है, लेकिन ऐसी मिस्ट्रीज होती थी, ऐसी स्टोरीज होती थी। लेट मी, इसका मैं आपको अपनी ही ट्रेडिशन से एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे जो एक सूफी थे, वो क्या करते थे, वो उड़ते थे। वो उन्होंने पता नहीं कौन सा कोई पानी पिया था, इवन दिस इज द काइंड ऑफ रिलीजन स्टोरी, एंड ही इज अ सेंट, उनको सेंट कहते हैं। वो सेंट थे और एंड ही यूज्ड टू परफॉर्म मिरेकल्स, के उनके मिरेकल्स से उसके पीछे बड़ी मिस्ट्रीज थी। तो ही यूज्ड टू फ्लाई such kind of stories which were related to the religion only, जो कि सिर्फ रिलीजन के दायरे में होती थी। चाहे उस रिलीजन के दायरे में कोई मिरेकल हुआ है, किसी ने कोई बड़ा मिरेकल परफॉर्म किया है, या कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं लगा है कि हाँ कि ऐसा हुआ भी नहीं हुआ, या कोई ऐसी बात थी। सच काइंड ऑफ स्टोरीज वर टेकन फ्रॉम द रिलीजन स्टोरीज। तो सी, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि स्टोरीज वर नॉट टेकन फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में से स्टोरीज नहीं ली जा रही थी, बट ओरल स्टोरीज जो रिलीजन के बारे में लोग बताते थे अपनी जनरेशन टू जनरेशन को, सो दे वर टेकिंग दोज स्टोरीज एज द मिस्ट्री स्टोरीज। उनके पीछे बड़ी मिस्ट्री होती थी, या कोई मिरेकल्स परफॉर्म किए होते थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टोरी दे यूज्ड टू परफॉर्म इन द स्ट्रीट्स। इज क्लियर बेटा? यस बेटा फातिमा, दीज प्लेज वर बीइंग परफॉर्म साइलेंटली। पहले जो परफॉर्मेंस होते थे ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्सन पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम, they never use the pictures, but they used to perform through their gestures, their body languages, and their facial expressions. Through these types of terms, they used to perform dramas. But now after Anglo-Saxon period, during the Anglo-Norman period, the transformation took place, so they perform silently but with the help of pictures. They use the pictures, not the body language and the facial expressions and the gestures. Okay, now let's move forward to a next slide, which is about miracle plays. Now, these plays were based on the saints. Now, these plays were also being on the saints, on the heroes, from famous myths. अब जो miracle है उसमें myths नहीं थे, लेकिन यहाँ पर myths भी थी, stories and the miracles they performed, such a Beowulf. The first and the most important significant work of the English literature is the Beowulf, and Beowulf is a person, is a hero, is a slayer of the monsters. So see बेटा, अब miracle plays में saints भी होते हैं जिन्होंने कोई miracle perform किया, कोई hero भी है, कोई उनका ideal बंदा भी है, कोई उनका वॉरियर भी है जिसने कोई मिरेकल परफॉर्म किया है इन द वॉर. सो दे took the stories from there and then they performed
dramas on those stories. Similarly, these plays were also based on the heroes of war. उनके जितने भी heroes थे, the heroes of war, they also performed stories over their miracles which they performed during the battle. बैटल में, बैटल ग्राउंड में जितने जितने उन्होंने मिरेकल्स परफॉर्म किए. सो इफ यू रिमेंबर द हरक्यूलिस and Achilles. If you remember the history of Achilles, then in ancient Greece it was said that there was a pound, एक कोई pound था, उसमें जो भी ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग उसमें डुबकी लगाएगा, that will never be killed by anyone else, that would become immortal, वो immortal बन जाएगा. So it is said that in the history it is said that Achilles की जो मदर थी, she dipped when Achilles was born, she found that lake, वो lake थी या pound था, जो भी था उसको वो मिला, and she hold the child from the toe of feet, ठीक है, उससे पकड़ा और उसको डिप लगा दिया उसमें pound में, lake में, तो he became immortal. So whenever Achilles used to go into the fight, nobody was able to defeat him. Even there was no any sword, there was not a blade which can cut the Achilles. तो Achilles को कुछ होता ही नहीं था. लोग जितने भी उस पे करते थे, वो सामने की आर्मीज जो होती थी, जो फाइट होती थी बैटल ग्राउंड में, तबाही कर देता था. सो व्हेन in a war, when the opposition saw that Achilles is damaging their army, एंड इफ यू रिमेंबर कि उस टाइम की जो वॉर्स होती थी वो महीनों तक चलती थी, सालों तक भी चलती थी, वो आए दिन उनकी लड़ाई होती थी. तो यू सी, तो उन्होंने कहा कि इखलीस को जब तक शिकस्त नहीं हो सकती, हम अपोजिशन को हरा नहीं सकते. सो लेट्स फाइंड हाउ टू डिफीट इखलीस, कि हम उसको कैसे मार सकते हैं. देन दे ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू देयर सोर्सेस, थ्रू देयर स्पाइस, के इखलीस को कैसे डिफीट किया सकता है. देन देयर स्पाइस, उनके जो जासूस थे, उन्होंने फाइंड आउट किया कि इखलीस कैन नॉट बी डिफीटेड बिकॉज उसकी मदर ने उसको एक ऐसी लेक में डिप किया था बचपन में, जिसके बाद बंदा इमोर्टल बन जाता है. सो देयर वाज द philosophers were sitting also over there, the people who had the wisdom, so they said that उसकी मदर ने obviously उसको किसी जगह से पकड़ के ही डिप किया होगा. So someone said that मे बी उसके पाँव का जो अंगूठा है उससे से ही उसकी मदर ने उसको पकड़ा होगा एंड देन उसको डिप किया होगा. देन दैट पर्सन, फिलोसोफर और द वाइज मैन सेड दैट कि इफ वी विल अटैक ऑन हिज टो देन वी कैन किल हिम. सो they targeted in the next war, they targeted Achilles feet, उसके feet के जो अंगूठे थे उनके ऊपर उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए. then they came to know that वो कौन सा पाँव था जिसपे वो उस नहर में या उस लेक में नहीं डूबा था. तो he start bleeding from that toe. Then they start hitting thousands of arrows on the toe, and in this way they defeated the Achilles. So see, this is the miracles. बेटा आपको अभी पता लगा होगा कि ये miracles क्या होते हैं. So see such kind of miracles. अब ये myth भी हो सकती है, मे भी सही हो, मे भी सही नहीं हो, हमें क्या पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये myth ही है, इसमें रियलिटी नहीं है. So जो myth पे स्टोरीज होती हैं, जो saints ने परफॉर्म किए, जो हीरोज ऑफ वॉर ने परफॉर्म किए, या ऐसी कोई स्टोरीज हैं जो कि उनके ट्रेडिशन से होती हुई आ रही हैं, सो दे यूज्ड टू परफॉर्म प्लेज ऑन दैट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इज दैट क्लियर बेटा? यस, मेडिकल प्ले समझ में आया? अलीना, ओके सर. यस यस, ओके. सी बेटा, जो मिस्ट्री प्लेज है ना, किसी ने मुझसे पूछा है कि डिफरेंस क्या है. सी बेटा, जो मिस्ट्री प्लेज हैं वो प्योरली जो बेस्ट थे, दे वर बेस्ड ऑन ऑन रिलीजन ओनली. वो सिर्फ रिलीजन के ऊपर पे मिस्ट्री प्लेज थे कि कोई भी ऐसी मिस्ट्री. बट यहाँ पे आपको एक चीज जहन में रखनी है कि नॉट अ सिंगल स्टोरीज वर बीइंग टेकन फ्रॉम द बाइबल. बाइबल में से कुछ भी नहीं लिया जा रहा था, बट वो जो स्टोरीज, रिलीजियस स्टोरीज, जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिनके अंदर कोई मिस्ट्री थी या जिनके अंदर कोई मिरेकल्स थे, किसी सेंट ने परफॉर्म किए थे या किसी अल्लाह वाले बंदे ने परफॉर्म किए थे. सो ओनली दोज स्टोरीज वर बीइंग परफॉर्म्ड इन मिस्ट्री प्लेस. बट हियर इन मिरेकल प्लेस, it could be a saint, it could be a
person, it could be a hero, it could be a man, it could be a warrior. वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसने कोई मिरेकल परफॉर्म किया है, चाहे वो कोई भी हो. जैसे बिवॉल्फ है, अगर बिवॉल्फ को आप करेंगे, ही वाज अ स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स, वो मॉन्स्टर्स को मारता था. सो इट्स आल्सो मिरेकल, it comes under the umbrella of miracle plays. So this is the basic difference between mystery plays and the morality plays. And the second question was asked by I think Kuratulena or someone else के सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई है. सी बेटा, ये तो बहुत मरतबा मैंने रिपीट किया है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन टू यू अगेन कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एंग्लो सेक्सन के टाइम पे हुई थी, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंग्लो सेक्सन द ड्रामाज वर बीइंग परफॉर्म्ड इन द मैरिज सेरेमनीज, फीस्ट, फेस्टिवल्स एंड द रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल ऑकेजन्स. उसके जितने भी ये मौके आते थे उनके ऊपर वो लोग जमा होते थे. एंड समवन storyteller used to stand in front of the desk or on the stage or somewhere in the place in the hall. Then all people used to listen to this, listen to that person. In this way they used to tell stories. इस तरह से वो अपनी stories बताते थे. Okay, but जो पहले जो transformation, ये it is known as the first transformation. ठीक है बेटा. Second transformation उसमें आई है Anglo-Saxon के time पे, जब silent plays perform किए गए. During the time of Anglo-Saxon period, they start performing silent dramas in the street. Street के अंदर जो उन्होंने silent dramas perform किए, it is the second transformation. And the third transformation is Anglo-Norman period, जो कि mystery plays and miracle plays के दौरान हुई थी. It is known as waving pictures के through वो अपने dramas को perform कर रहे थे. I hope कि अब मैंने आपका question का आंसर किया होगा. Okay, बेटा, don't worry. I'm here to explain to all of you. अगर किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं है, you may ask me again and again. मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही ये सेशन ले रहा हूँ. Okay बेटा, so don't worry. Okay, miracle plays are done. Now only 2 minutes are remaining. बेटा, अब मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ और दोबारा आप ज्वाइन करें ताकि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ. ओके, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, आप सब दोबारा ज्वाइन करें.